अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। काफ़ी टाइम हो चुका है कि वीडियो नहीं बनाई थी कोई। एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी था। रिसेंटली मैंने एक एरर मैंने देखा है जिसको मैंने रिजॉल्व कर लिया है, और उस एरर को रिजॉल्व करने में मेरे तकरीबन एक दिन आप लगा सकते हैं, या कह सकते हैं कि वो वेस्ट हो चुका है। Hi guys, how are you? And I have been busy and somewhere, so I wasn't been able to upload any video for quite some time now. But today I'm gonna post a video to resolve an error of React.js, which I have been facing for the last one day, but I have got a solution for it. And I want to tell you that I have searched everywhere on the YouTube, on the internet, everywhere, but I didn't get anything out of it. मैंने हर जगह सर्च किया, हर जगह देखा, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया, ना मुझे कहीं इसका कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल रहा था। बट आई हैव फाउंड द सोल्यूशन ऑफ इट। एरर कुछ इस तरह से आ रहा था कि मेरा जैसे ये मैं वी एस कोड में अपना प्रोजेक्ट जो है मैंने बनाया हुआ था, मैं इसको चला रहा था, बट मसला ये था कि जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के वक्त में ये क्रोम पे ओपन नहीं हो रहा था। मतलब जब भी मैं इसको डिबग कर रहा हूँ तो ये क्रोम पे ओपन नहीं हो रहा था, लोकल होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग दे रहा था, या फिर रिफ्यूज टू कनेक्शन दे रहा था। The actual error was that when I was trying to debug my project in VS Code of React.js, my project was not debugging and continuously showing an error like refuse to connection or something like that. So let me show you once again by pressing Control F5, and just wait a second. Yes, here it is. So yes, I debug it, and it throws an error like this, that the site can't be reached, and localhost refused to connect, and I was totally frustrated due to this. But here now I have got a solution to it. You just need to open a launch JSON file, which you can find here. Yes, here it is. You just need to change up your port number. It is by default 8080, ये by default 8080 ही होती है, बट आपको उसको चेंज करके 3000 या समथिंग इस तरह कुछ कर लेना है। चेंज करनी है अपनी पोर्ट को। अगर आप कोई और सी पोर्ट जानते हैं तो वो आप डाल सकते हैं जो फ्री हो इस वक्त। मैंने फ़िलहाल 3000 यूज़ करी। मैंने इसको कंट्रोल F5 अगेन प्रेस किया, इसको रीलोड किया, एंड हियर इट इज़। और मेरा ये reactjs का जो प्रोजेक्ट है वो अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये एंड here it is, my reactjs project is now working properly. It was just a port issue. I guess it is somewhere busy, or I have used different servers as well, XAMPP and another one too. So I believe that I feel that it is already busy somewhere. That is why it's not responding on my reactjs project. So I would recommend you all to just change your port number and don't get into it so long that I have wasted my whole day, and I was totally frustrated due to this. But finally I got this, and I'm pretty fine that feel okay कि मुझे मिल चुका है इसका सोल्यूशन। और आपने जैसे इसकी पोर्ट नंबर चेंज करना और इस तरह टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बचाएं, एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।